Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of The Art of Investing with Naeem Khiyani. Again, thank you so very much. आपने हमारे सारे episodes को पसंद किया और अपनी राय दी and we are trying to get it better as we go. Last week हमने very hypothetically gold को discuss किया था और अगर आज जब हम ये program record कर रहे हैं इस वक्त gold की price है at around 4300 US dollar. हमने 2 week पहले जब gold को cover किया था it was around 3700 and you can see the price which is being jumping right now. Analyst की prediction के हिसाब से gold will go until 52 to 5300. 1000 पॉइंट मजीद गोल्ड को ऊपर जाना है, लेकिन जितना गोल्ड ऊपर जाएगा उतना यूएस करेंसी जो है वो शेकी में आएगी. तो which is why there are certain things what they are working on right now is to bring gold back and then move up. तो गोल्ड की प्राइस पे आपको जो है वो keep an eye on it. क्योंकि this may give you a lot of profit as we go further. So keep an eye on gold because it will come down and then it will go up. So let's start our program. So आज हम पहले बात करते हैं US stocks and US stocks की. So इस वक्त अगर आप देखें तो tech companies जो हैं they are booming right now. AI is getting a lot of feedback not from one company but from different companies along with जो AI सॉफ्टवेयर और एआई की हार्डवेयर पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड कंपनीज हु आर स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग एआई एज वेल. सो उसकी वजह से टेक कंपनीज आर गेटिंग लॉट ऑफ मोमेंटम एंड ड्यू टू विच वी सॉ S&P, NASDAQ जो है दे रोज एंड डाउ जोन्स दे रोज एट अराउंड 3.3% and 0.5% respectively, right? So that's exactly what is going on right now. Nvidia 1.3% ऊपर आया है last week से, which is became one of the valuable stock. Nvidia को अगर आप देखें तो it's $4.2 trillion company हो गई है Nvidia and it is growing as we speak. So these are the things which you need to consider when you are investing, that in which industry and in which sector you will be getting involved in. AI stock as I mentioned, different companies जो AI stocks पे काम जो जिनके AI stocks market में है they are booming that too. Microsoft is gonna boom, Google is getting a lot of momentum and Nvidia we just saw. So that is US stocks. अच्छा, next हमने बात करेंगे Cineplex. Cineplex को last time हमने जब cover किया था we said कि Cineplex का जो revenue है that is growing and which is good. But on the other side, जो Cineplex is selling digital signage unit to the US company. तो US company को वो अपना digital media का सारा जो sector है वो बेच रहे हैं. That has already been announced. तो उसकी वजह से Cineplex के stock में कुछ changes आई हैं. So Cineplex की इस वक्त जो market price है जब भी हम program हम record कर रहे हैं that is $11.97. Due to that news, it's gonna go up. हमने Cineplex को काफ़ी different phases में भी cover किया है. जब हमने COVID में cover किया था it was around $5 at that time, or now it's grown exponentially in these many years. So Cineplex is a good company to look into because as I said they have already sold their media division to the US department or US company, and based on that they will grow from that perspective as well. So keep an eye on Cineplex as well. अच्छा, coming back to our presentation, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्ले ने 16,000 जॉब्स जो हैं वो कट की हैं आइडेंटिफाइंग इन द कॉस्ट कटिंग कैंपेन. अच्छा, अब ओवरऑल अगर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को देखें तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर गेटिंग मिक्स्ड अप in tariff discussion. Nestle got into in one of the cases as well. Nestle का जो मेन प्रोडक्ट है that is caffeine, कॉफ़ी. और अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो ब्राज़ील से आते हैं एंड दैट्स वेयर द टैरिफ गॉट इनटू ट्रबल फॉर देम. सो इस वक्त अगर आप ये देखें स्विस कंपनी जो है वो कॉस्ट कट्स टू 3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स विच इज़ $3.776 बिलियन बाय द नेक्स्ट ईयर अप फ्रॉम प्लान 22.5 बिलियन. तो इतना वो कट कर रहे हैं. और कॉफ़ी हैबिट जो यूएस में और हम कनाडा में भी देखते हैं इट्स मैसिव राइट नाउ and that's where it fueled a lot. अगर आप ये देखें तो supply is about 30% of American market, followed by Colombia at roughly 20% and Vietnam about 10%. Tariff negotiations are ongoing. So this is the reason why it make Nestle as a bigger company
to start cutting the jobs for that reason, ताकि वो अपने operating expenses को बचा सकें. And that's exactly what is happening right now. So it's not only Nestle, but there are other companies who are getting in line to do the job cuts, and which is why we are seeing inflation and job losses a lot in the market, and that's exactly the whole reason behind it. अच्छा जी, next हम आते हैं BMO. BMO, as I mentioned कुछ अर्से पहले कि कुछ banks जिसमें TD था, RBC, they already started their operation in US, and TD got penalized to do that because of different regulations and all, and that's exactly what BMO is getting into it as well. So they are selling 138 US branches of BMO to First Citizen Bank, which is in US, and they plan to open 150 new branches along with the same name. So that's exactly what is happening with BMO. BMO is doing the right thing. So instead of having a Canadian operation there, they are selling this to a US subsidiary, and they'll take it from then onwards. Achha, one more thing is First Citizen Bank will assume about 5.7 billion in deposit and purchase about 1.1 billion in loans. So that's exactly another thing what we need to look into. BMO का जो stock है वो इस वक्त हम देखते हैं. All right, इस वक्त है $175.35 का. इस वक्त अगर उसकी आप एक महीने का जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, it is going up and down. 3 महीने में अगर इसका हम moving average देखें, so it is going up above the moving average, which is 50 day, what I am showing it to you right now. PE ratio इनका 15.36 है और dividend ये देते हैं 3.62%, which is not bad. इनका जो next dividend है वो आने वाला है 30th अक्टूबर को. Analyst की prediction इस वक्त है आप इसको hold करें क्योंकि ये हो सकता है नीचे जाए based on the investment or investors confidence के point of view से, क्योंकि now you are selling the whole branch or whole subsidiary to a different company. You may not get a lot of it, and which is why it's on hold position. So if you would like to get involved or get in it, just wait for the price to come down between 168 to 165, and then you can jump in to get more momentum out there. So as discussed, there are different things been going on in the market. अच्छा, कुछ investors के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है कि यू डोंट इवन नो वेयर एग्जैक्टली द थिंग्स आर गोइंग इन दैट वे. आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको अंडर $10 जो इस वक्त अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं उनकी इंफॉर्मेशन देंगे. If you would like to invest or not, that's totally up to you, because you need to do your due diligence before doing it, but we'll at least give you a list of those stocks which you can get, which you can look into further. These are all $10 or less stock इस वक्त चल रहे हैं. Market value अगर usually अगर आप invest के point of view से, क्योंकि definitely there are job losses and there are a lot of things which is happening right now, अगर वो नहीं कर पाते so these are the stocks which will give you a good momentum out of it as well. I'll go through this one by one. यूजुअली इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप अंडर $10, क्योंकि दैट्स अ नॉमिनल वैल्यू फॉर एनी वन टू इन्वेस्ट, अगर आप $100 भी किसी स्टॉक में लगाते हैं, अगर वो स्टॉक $5 का या $6 का होता है, तो यू विल गेट अ गुड क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स देयर. एंड अगर उसकी मोमेंटम वहाँ पे होती है, अगर वो 20% या 25% भी स्टॉक ऊपर आता है, क्योंकि जो छोटे स्टॉक होते हैं उनकी जो मार्केट मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, राइट. और अगर कोई भी स्टॉक अगर $5 का आपने लिया है और वो $7.5 का हो गया है, तो 25% गेन राइट देयर फॉर यू. सो अगर आप 25% गेन को देखेंगे बड़े स्टॉक में और छोटे स्टॉक में, यू आर एट द एंड एंडिंग अप प्रॉफिटिंग इन द सेम वे, राइट. either you invest $100 either you invest $1,000, but your profit percentage would remain in that way. So that's what you need to look into. एक और strategy होती है investment के point of view से कि अगर market इतनी volatile है and you cannot invest a lot of money there, move on to these smaller stocks and then look into. So let's start discussing one by one. These are not my recommendation at all. These are the things what I have just listed it down for you. और इसका मैंने PE ratio और PB ratio इसका चेक किया है. They are undervalued, which means कि ये under market value इस वक्त आपको मिल रही है. There is a concept called intrinsic value जो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी करेंगे और आपको समझाऊंगा अभी मैं.
इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपको मार्केट से सस्ती मिल रही है, सो दैट्स व्हाट द वैल्यू व्हिच यू विल गेट इट फॉर. अब वो मार्केट से सस्ती कैसे मिलती है, कैसे उसके फॉर्मूले लगते हैं, विल एक्सप्लेन दैट इन फर्दर. बट दिस इज द लिस्ट व्हाट I have put together as part of intrinsic value, PE ratio and PB ratio as well. पहला इसमें है well health technologies. ये डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है ऑपरेटर. इसका इस वक्त इसका स्टॉक मार्केट प्राइस है $4.93. इस वक्त 89 हो गया, जब हम बात करें तो 93 था. और it's not a bad company to look into, right? इनके फाइनेंशियल्स भी सही हैं, इनकी फोरकास्ट भी ऊपर जा रही है, राइट? और फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स 1.31 बिलियन मार्केट कैप है इनका. 2010 में ये फाउंड हुई है और engages in portfolio healthcare facilities and all that. Do review honestly this particular stock. It's COVID के ज़माने में they gain a lot of momentum and now they are getting as we go further. But as I said, it's right now it's 489. $5 से नीचे का स्टॉक है. अगर ये $6 या $7 का भी होता है तो you gain your momentum right there. अच्छा जी, next है BlackBerry. BlackBerry एक ज़माने में it was up more than $144-145 का स्टॉक था ये. Then it start bashing it around and then it came down to around $3 and $4 and now they are at 6.35. They have already been bought by Huawei, that's a Tokyo company, और वो bought कर चुके हैं BlackBerry को. So 6.35 इस वक्त इनकी वैल्यू है मार्केट. और इसको भी देखा जा सकता है. BlackBerry जो है इस वक्त दूसरी सपोर्ट पे आ गया, इवन दो इनका हार्डवेयर ज़्यादा नहीं चल रहा, बट दे आर इनटू different support level as well, right? So that's one thing which you can look into. Second है हमारे पास Denison Mines Corp. They are uranium producers, right? Or they are popular in small cap resource pick. That's what they do. $4.32 इनके इस वक्त स्टॉक की प्राइस है. DML जो है इसका, ये सारे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. They are all in Canadian dollars, so you don't have to pay if it's a US the conversion rate of it. $4.32 इनका स्टॉक की प्राइस है. Financials are not bad honestly, right? I checked it. $3.99 billion की कंपनी है ये, right? Dividend इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा. Basic EPS earning per share is -0.10, which means they are not earning anything out of it, so they are desperate to get it out in the market. Or they are into exploration development of uranium and they are in the west side of Canada. अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं PHX Energy Service. ये कंपनी जो है ये attractive valuation matrix, yeah, data provider, low PS, yes. So they are in energy, right? Their market price इस वक्त है $7.45 as per when we are recording this program. Market cap in PE ratio is 6.54, EPS is 1.14, which is not bad. They are actually earning something out of that stock, and dividend dividend is 10.5%. Is one of the best dividend you can get out of the energy company at $7.45. It's, you cannot go wrong with that. Even though अगर उनकी प्राइस ज़्यादा हाइक अप नहीं होती, you are still earning the dividend out. और इनका जो एवरेज वॉल्यूम है दैट इज 140 मिलियन एंड या सो अगर आप $7.45 लगाएंगे तो 80% आपको 80 सेंट्स आपको वापस मिल जाएगा, राइट? तो टेक्निकली 10% आपको वापस मिल रहा है एज यू गो फर्दर, सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम रॉयल्टी. इस वक्त लिथियम की काफ़ी डिमांड चल रही है ड्यू टू बैटरीज जो इलेक्ट्रिक कार्स में चल रही हैं. तो 6.35 इनकी इस वक्त मार्केट प्राइस है. और इस वक्त अगर आप इनके फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हाँ यहाँ देखते हैं, PE रेशियो इस वक्त -42 है, so which means they are getting into the loss right now. Price book ratio 1.75 है. EPS is -0.09. They are not earning anything right now. और revenue is 1.6 billion. Their operating जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो काफ़ी जो है वो ख़राब चल रहा है इसमें, लेकिन दे आर स्टिल अर्निंग रेवेन्यू. सो दैट्स वन यू कैन लुक इनटू. अगर इनको एक और कोई दो प्रोजेक्ट मिल गए, सो दे विल बी शूटिंग अप लाइक क्रेजी.
इस वक्त एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है स्ट्रॉन्ग बाय पे, 6.3 पे इस वक्त इनका स्टॉक है। और अगर हम एक वीक के एनालिसिस के ऊपर देखें, so they were at 16.02 and they are at 6.35. अगर इनका थोड़ा सा जंप भी आता है 10% 12% का या 15% का, that's the profit you can make and exit out of that profit. इन छोटे स्टॉक में आपको ज़्यादा लंबा रुकना नहीं है, आपने एंटर हुए, आपको अपना प्रॉफिट का परसेंटेज मार्जिन मिला एंड देन यू आर एग्जिटिंग इट आउट. सो दैट्स अ स्ट्रैटेजी फॉर दीज स्मॉलर स्टॉक फॉर यू टू गेट इन. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं टिम्बर क्रीक फाइनेंशियल्स. दे आर इनटू मॉर्गेज एंड रियल एस्टेट फाइनेंस विद यील्ड. अच्छा, इस वक्त मॉर्गेज और रियल एस्टेट की मार्केट, यू नो हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग आउट. 7.16 इनकी मार्केट प्राइस है इस वक्त. और डिविडेंड यील्ड दे आर गिविंग आउट 9.43% and total yield they gave out 10%. So that's another good stock to look into. Price नहीं चल रही, dividend तो मिल रहा है आपको, right? So that's exactly the way to think in this way. Next हमारे पास दो हैं जो penny stock के point of view से, मैं ज़्यादा recommend penny stock करता नहीं हूँ, but under $10 just to give you a flavor out, that's another thing what you can look into. 30 cents का ये है stock इस वक्त, और अगर ये 30 सेंट से 60 सेंट्स या $1 का भी होता है तो यू गेट योर 200% राइट देयर, राइट. सो ऑलवेज लुक फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि कितने परसेंट आपको इसका रिटर्न मिल रहा है. इफ यू आर गेटिंग अ गुड रिटर्न, सेल इट, एग्जिट आउट ऑफ दैट स्टॉक, राइट. सो दैट्स अनदर वन. एंड द लास्ट वन व्हाट वी हैव, इलेक्ट्रोवावा. ये भी बैटरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इस वक्त इनकी प्राइस है 97 सेंट्स, right, and they are all in Canadian. Financials अगर इनके आप देखें, so financials भी कुछ ज़्यादा जो है बुरे नहीं हैं इनके, to be very honest with you, right. Neutral analysis है इस वक्त मार्केट का, right. और financials के point of view से अगर ये नीचे आ जाए और मैं आपको दिखा दूँ एक, हाँ, तो financials इनके इतने ज़्यादा बुरे हैं नहीं. इस वक्त इनके financials जो चल रहे हैं वो price times book is 8.28, which is a lot. Debt to equity ratio is 93%. PE ratio is 169, which is way too much, right? So yeah, so this is what you need to look into before you jump in. 97 cents इसका stock है. अगर, as I said, अगर ये $1.50 का भी होता है तो you gain your 50% right there and then you can move out of it. So this was it folks. So आज as I said कि हम इस तरह के stocks भी अब आपके सामने लाना शुरू करेंगे. एक और चीज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट प्लानिंग इट आउट. काफ़ी लोगों से जब मैंने डिस्कस किया, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट दे आस्क इज, यार कनाडा में बिजनेस कैसे कर सकते हैं, राइट, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन कनाडा. हमें कोई आप आइडिया दें, कोई हमें लाइन बताएं, हम रेस्टोरेंट्स में जाएं, हम जो है वो डिफरेंट बिजनेस ट्राई करें एंड ऑल दैट. सो आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु आर रनिंग बिजनेस एंड वेरी वेल रनिंग बिजनेस इन कनाडा. सो विल स्टार्ट इन्वाइटिंग देम इन द शो. Not to promote their business, but to at least give you an idea कि अगर रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपको जाना है तो what exactly you need to think before you jump in, right? What are the challenges you may face and what are other obstacles you may need to get in. So these are the things what we'll start discussing with a couple of folks which we lined up, and then inshallah we'll start bringing them into our program from the next week, right? So thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Khiyani. I hope and I know that माशाल्लाह आपको प्रोग्राम काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग अब मिलते हैं, they watch on TV and which is very good. So keep watching Toronto 360 and keep watching The Art of Investing, and we'll inshallah bring more ideas and more discussions to this program. Thank you so much. At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves, which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है
तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction,
Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हुआ पूरा बनता सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or